Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. Before I start, I read out the disclaimer. Yes, good morning, everybody. Okay, I have to share my screen. Pardon me for that. Yes. So I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So yesterday we saw volatility surfacing and मार्केट इज रेस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो ये रेंज बाउंड मार्केट है और इसमें आपके दो लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। सो एज अ ट्रेडर आई हैव टू फिगर आउट वेयर एंड विच आर दोज लेवल्स। एज ऑलवेज पहले कुछ भी ध्यान नहीं बनाते। देखिए कल अगर आप देखने जाओ ना तो हमने ये गैप गैप के पहले की कैंडल ऑलवेज रेजिस्टेंस रहती है। एग्जैक्टली ये गैप पे गया और मार्केट नीचे आया। अगर नीचे भी आया है तो हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, इट जस्ट फिल दिस पार्ट ऑफ द गैप, गेटिंग इट। सो साइडवेज मार्केट में नो डाउट वोलेटिलिटी रहती है, यू ऑलवेज सी वोलेटिलिटी, बट साइडवेज मार्केट्स moves in a defined range, and as a trader आपको you have to spot where the supply and where the demand is, where the buyers, where the sellers are, right? In between short term momentum आपको मिलते रहते हैं, that you can pick it up with some momentum signal like a super trend, or I use multiple moving average trading system which I have put it in the substack. So let's start and scan the headlines. एक ही headlines देखते हैं which says that US stock futures steady. यूएस में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है अमिड कूलिंग रेट हाइक। तो रेट हाइक का जो एक फेयर था वो कूल ऑफ हो रहा है। ईरान का जो टेंशन है वो परसिस्ट, ये खत्म होने वाला नहीं है, तो इसको ये बहुत बार हमारे स्टॉप लॉस लेके जाएगा। अब मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ईरान एंड ट्रम्प। सो डाउ जोन्स एंड ऑल यस्टरडे वर नॉट दैट मच ग्रीन बट ओके था, कुछ भी गड़बड़ नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। अभी इंडाइसेस की फ्यूचर्स देख लेते हैं। I'll also play this on my mobile to see whether the stream is okay or not. Okay. सो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखो अभी तो थोड़े माइल्ड है, 18 पॉइंट प्लस है। यूरोप भी थोड़ा, इट्स नॉट वेरी नेगेटिव बट फ्लैटिश है। निकाई 600 पॉइंट का कट है और बोविस्पा जो कि ब्राजील पार्ट ऑफ ब्रिक्स है एशिया, उसमें भी 700 पॉइंट्स का कट है। इट्स मोर ऑफ अ फ्लैटिश मार्केट। नाउ अगर गिफ्ट निफ्टी हम देखें तो जितना हमने अभी देखा उसके हिसाब से लगता है गिफ्ट निफ्टी विल बी प्लस और माइनस 25 पॉइंट्स और फ्लैट भी रह सकता है। So now let's go to Gift Nifty. So Gift Nifty, if you see, is right now trading with a plus 80 points. देखिए फ्लैटिश मार्केट में 50 पॉइंट प्लस माइनस आप लेके चलो। मैं 50 पॉइंट क्यों बोलता हूँ, बिकॉज दैट्स द स्ट्राइक इंटरवल। एज अ ट्रेडर योर लेवल्स आर एज पर स्ट्राइक इंटरवल, रिमेंबर दैट। या हरप्रीत, गुड मॉर्निंग। नाउ आफ्टर दिस लेट्स गो टू इंडिया विक्स। अभी क्रूड देखना नहीं है हमें, बिकॉज मोर और लेस क्रूड ने एक अपना चार्ट डिसाइड कर लिया। इंडिया विक्स अगर आप देखो तो वोलेटिलिटी कल के दिन काफी लो थी, भले मार्केट गिरा है। तो इंडिया विक्स जब तक ये चैनल में है ना, मार्केट में सर वोलेटिलिटी रहेगी, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। इसका मतलब क्या है, देखिए ये स्विंग्स है। तो निफ्टी भी इसी तरह से जब इंडिया विक्स का ये अप होगा तब निफ्टी का डाउन होगा, रिमेंबर दैट। ओके, so nifty and vix are more of inversely related in the short term,
और यही चीज हमें दर्शा रहा है. सो नथिंग मच फ्रॉम द विक्स पार्ट ऑफ इट, बिकॉज विक्स में कोई वन साइडेड मूवमेंट अभी तक दिखा नहीं रहा है. विक्स देखे यहाँ से नीचे भी आया तो वो स्विंग अप और डाउन दे के आया, तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है, स्पाइक्स है, वो आ रहे हैं. जैसे विक्स स्ट्रांगली ऊपर गया था उस दिन अपना मार्केट नीचे गया था, ये विक्स नीचे गया, मार्केट में एक पुल बैक आया. अभी विक्स ऊपर आ रहा है तो मार्केट थोड़ा नीचे है. गेटिंग माय पॉइंट. सो मोर और लेस एक वोलेटाइल स्विंग्स की तरफ का मार्केट है. दैट द टेक्सचर ऑफ द मार्केट, द मार्केट का जो ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू है वो साइडवेज में ये वॉलिटिलिटी है. दिस इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द विक्स पार्ट. दैट इज व्हाई वी स्टडी विक्स. After this only we go to Nifty. If I go to Nifty, कल देखिए, अभी निफ्टी में एक चीज आप ध्यान रखो. Keep one thing in mind. 1, 2, 3, 4. Last 4 days it has not crossed this high. So you very well know यहाँ पे sellers है, यहाँ पे gaps है. So that is how Nifty is. And if I further इसको मैं देखता हूँ तो it is in this small little range. 4 दिन से इफ यू आर अ रेंज बाउंड ट्रेडर, विच मीन्स, देखिए अपर एंड ऑफ द रेंज को हम हाई ऑन लोकेशन बोलते हैं, लोअर एंड ऑफ द रेंज को लो ऑन लोकेशन बोलते हैं. या वेंकट, गुड मॉर्निंग. सो नथिंग हैज हैपेंड फॉर द लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 days. मार्केट्स आर जस्ट गायरेटिंग, मतलब स्विंग्स दे रहे हैं ऊपर नीचे, एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम द विक्स ऑल्सो. और आफ्टर दिस जस्ट पिक अप योर लेवल्स. देखिए अभी मार्केट में मोमेंटम आपको इंट्राडे जो स्पाइक्स आती है ना, वो एमएमए विल ओनली एबल टू पिक इट अप. इफ समबडी इज वंडरिंग, गो टू द सबस्टैक नोट एंड फिगर आउट द मल्टीपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम. सो ये जोन में भी एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, अगेन गैप डाउन, अगेन गैप अप. तो वॉलेटिलिटी एक रेंज में डिफाइंड है. तो आप ऐसे एक बॉक्स बना लो ये रेंज में. राइट. Now on a 60 minutes, this is from where market fell yesterday. मार्केट जहां से गिरता वहां पे सप्लाई है या सेलर्स है. दिस लो वॉज ब्रीच, तो इसको हम ले नहीं सकते, इसको पिवट पॉइंट मान सकते हम. देन इट इज एट दिस गैप एट द बॉटम. So this is how Nifty is on a 60 minutes time frame. But as a trader, we then go to 15 minutes time frame as a day trader. If you are more aggressive, you can go to 5 minutes. 15 में भी I don't need to fine tune this level. यहाँ पे बहुत time spend किया and suddenly it cracked. Right? So this level will be intact. और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है. या वेंकट, निखिल, good morning everybody. So we are going to trade within this range today. So yesterday also, how many of you applied VWAP and a trade system? So देखिए बीच के जो levels है, these are called pivots. Pivots means it opens, either it crosses on the upside or crosses on the downside. So ये break हो जाता है ना, then it gives you an indication there is a small little spike in on the upside. So that level for today is this high. Prominent high score. Yes, Harpreet, I do that. Yesterday, you see this cell was generated around VWAP plus MMA cross. Okay. Which means that just let me take you to my trading. Let me see if the broadcast is, because here we have. So one momentum you need, because the spikes are बहुत बड़े spikes आ रहे. 100 पॉइंट का spike को मैं इंट्राडे बहुत बड़ा spike मानता हूँ. No. Right? So this is the pivot for the day, which is this high. If it gets crossed 24,105, you can see a small little spike till 24,140 order levels. So इस तरह का market है. Now in this market, we can't right now mark any channels or anything. The channel is more of a flat channel. Flat channel का मतलब है both lines are slanting like this.
and then always right now, please mark a channel midway. Now you see midway पे एक opportunity मिलती है. So this is how the markets are today. It's a channelized, जिसको हम rectangle भी बोलते हैं, and that's how markets are moving. Uh, One thing is very clear: your demand supply is very clearly visible on the price charts. Right? और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है आज. आप ओआई देख लो सेंसेक्स पे एक बार. लेट मी गो एंड चेक इट फॉर यू. आई विल गो टू सेंसेक्स स्पॉट and I will go to 60 minutes time frame. I just want to check the OI. देखिए जो मैक्सिमम OI है सेंसेक्स पे वो यहाँ पे 78,000, जो कि क्लोजिंग से करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर है. उसके पहले 20 lakhs OI in call and 24 lakhs in call is around कल का हाई. तो OI भी ये दिखाता है कि कल का जो हाई है वहां पे OI का एक जमावड़ा है करीब करीब 50 लाख का OI. Got it everybody? This is how we use OI profile and price action. क्या ये निकल के एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता, वो आपको ड्यूरिंग द मार्केट देखना. एज ऑफ नाउ आई जस्ट पुट अ लिमिट आउट हियर. और पुट साइड देखो तो देखिए ये बेस पे पुट राइटिंग. जस्ट सी दिस एट दिस बेस. If this base gets taken out, then the next put writing is at this level, which is 76,400. Getting my point, everybody? This is how the Sensex is. So जो बेस आपको दिख रहा है उसको मैं पिवट पॉइंट या बेस मान के चल रहा हूँ, वो टूटा. दैट मीन्स कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी हो जाएगा. या इट्स अ क्रेडिट स्प्रेड मार्केट. सिंपल. आफ्टर दिस लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, I'll straight go to 60 minutes. It's also in a range. Yesterday, what happened? What we had seen, it came to this gap. How many of you noticed this? This we had marked. आपका morning में miss हो गया. Then you got a negative trade over there. How many of observed this yesterday? This is where we had marked. So I think this level is not changing even today. Anybody observed it? And then this gap over here is going to be your support. मैं पूरा ले ले रहा हूँ. Then I go to 15 minutes. अभी 15 मिनट्स में देयर इज अ स्मॉल लिटिल कंजेशन येस्टरडे. और वो कंजेशन का जोन कौन सा? दैट कंजेशन इज बिटवीन दिस टू. देखिए इस तरह के कंजेशन अगर निकल जाते हैं ना तो एक छोटा सा स्पाइक हमें मिलता है. सो मोर और लेस बैंक निफ्टी इज बिटवीन 58,200 एंड 57,300. अभी मिडवे क्लोज हुआ तो 300-400 पॉइंट ऊपर, 300-400 पॉइंट नीचे, वो ट्रेड, वो वाला मूवमेंट आज बैंक निफ्टी हमें दिखा रहा है. सो दैट्स हाउ बैंक निफ्टी इज. अभी चैनल का मैं मिड पॉइंट निकाल देता हूँ. यस. नाउ अप्लाई योर वीवैप एंड सम मूविंग एवरेज सिस्टम एंड बी प्रिपेयर टू ट्रेड द मार्केट. देखिए कल मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आया तो ये निकल जाता है, देखिए आपका 100-200 पॉइंट का स्पाइक आपको मिल जाता है. And having said that, please VWAP and one momentum system please get plotted. So that's all from my side. Markets are fairly very distinct levels है आज market के. हड़बड़ी मत करो, levels to levels trade करो and don't force any trades. I repeat, don't force any trades. Patience रहा तो trades मिलेंगे. Volatility, with the make volatility a friend with consolidation break either on the upside or on the downside. I think फिर से मेरा सिग्नल चला गया. I think today just give me a minute. Yeah, it's getting loaded. Yeah, so I'll just share my screen. So post, I might be ending the session, but after this, do give your comments. Okay. Once I close this session, Chetan, I've never seen you. Harpreet, Jahind Investments, Venkat, yeah, Venkat, IB Mathematics. That's all from my side today, friends. Have patience to trade the markets. Levels are very distinct, very well defined.
The biggest indicator right now you need is patience. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day. Once I end the session, Kamlesh, all the participants do give your comment, good, bad, or ugly. Thanks. Have a nice day. We'll again meet in the evening at 3:45.